we don't have to wait. 8/26, final deadline is December 26. No extension expected this final. People will start expecting कि मई महीने का भी 100% दिसंबर होगा, लेकिन किंतु परंतु होगा नहीं होगा, हमें वो रिस्क नहीं लेना चाहिए. So immediate action this week: committee meeting, discuss amnesty scheme, appoint subcommittee for OC if you want, collect basic documents, gather society registration, approve plans, property tax, contact PMC, schedule free consultation to assess eligibility, estimate cost, inform members, send circular to all members about the scheme and upcoming. So you can share this PPT with them, send a circular. Managing committee should take this up immediately and start looking out for the documents. Okay. Within 2 weeks, key milestone, you have to do document phase, locate original approved building plan, get latest property tax assessment copy, compile list of all members with the flat number. Formalization phase, schedule SGM, prepare agenda with resolution draft, finalize BMC appointment terms, proactive planning, plans missing, apply to BMC for certified copies immediately, start WhatsApp group, set up dedicated bank account for OC fund if required. जैसे कि हम सोसाइटी में रिपेयर फंड होता है तो रिपेयर अलग करते हैं, इसका करना है तो आप अलग कर सकते हैं. Wherever the whole idea is, every member should be informed of every decision you are taking or is to be taken or whatever is your thought process, so that it can be easier and transparency is there. By March 26, application ready, checklist, they must complete SGM, passed with 2/3 होगा पर 51% भी चलेगा. Okay. But PMC officially appointed, documents collected, site survey as built plans, NOC application filed, premium estimated, member contribution start. Timeline is starting in Jan. Sorry, this is 26, 15 plus months available, starting in 25, only 8 months. Starting after October 25, May, risk missing, May deadlines. So basically, this is, हम हमेशा एक साल पीछे रहते हैं. Anyway, important is must complete this by March. Okay. 51% तो मिलेगा ना? नहीं, it is general body resolutions are binding on all the members. इतना तो मालूम है ना? 51% कंसेंट हो गया, पर कोई बोलेगा पेमेंट नहीं देगा तो उसके पास मेरे पास तोड़ नहीं है सोल्यूशन. हाँ, तो कुछ लोग बोलेंगे मुझे नहीं करना है. जैसे कि मैं आपको बोल दो, बांद्रा में पहली रोड पे बिल्डिंग है, बन जाएगा, बीएमसी लेके जाएगा, वांदा नहीं, लेकिन मैं नहीं करता. सोसाइटी ने भी बोले भाई तेरे को ऐसा छोड़ने को तैयार है तो तू बेच के निकल जा. नहीं, मैं बेचूंगा भी नहीं, मैं हिलूंगा भी नहीं और मैं पैसा भी नहीं लूंगा. किसमें? पार्ट ओसी आपका सिचुएशन कैसा होता है? 2 माला ओसी, 3 माला नहीं, 4-5 माला, ऐसा नहीं. इनिशियल कर सकता है, लेकिन अभी हाईकोर्ट का जजमेंट आया कि ओसी हैज टू बी फॉर द फुल बिल्डिंग. हाँ, अभी क्या है कि मैं एक फ्लैट के लिए भी ओसी मांगता हूँ तो मेरा ड्रेनेज सिस्टम वो सब तो मांगता ही है. उसमें आधे लोग एग्री नहीं है, 25% लोग एग्री नहीं, उसके लिए क्या है? तो MCX एक्ट क्या बोलता है? ऑल डिसीजंस ऑफ मैनेजिंग कमिटी, जनरल बॉडी इज बाइंडिंग ऑन ऑल मेंबर्स. अगर हाउसिंग सोसाइटी है तो हाउसिंग सोसाइटी का नियम क्या है? जनरल बॉडी इज सुप्रीम. हाई कोर्ट ऑर्डर ऑल्सो सेज एवरी डिसीजन ऑफ जनरल बॉडी मीटिंग इज सुप्रीम. हाँ, वो तो है. तो मेरा तो क्या था कि समझो ये स्कीम आया है तो मैंने सोचा कि आपको
समझना चाहिए, समझाना चाहिए कि इसमें प्लस माइनस क्या है। आप समझे मेरी बात? So once a general body is passed, then you can start recovering also from them. Then it is becoming a legally you are bound to ask money and recover money from them. That is the whole cooperative movement ही ये है ना कि भाई everyone is the owner. लेकिन जहाँ cooperative act आता है तो cooperative बोलते कि cooperation तो मांगता है ना हमको. So if they are not cooperating, then they are bound by the act, which says general body decision are supreme. By hook or by crook अगर करना है, you can then claim money from them. Decision must not be whimsical, willful decision. Again, decision will be taken. General body meeting and not be whimsical and willful decision. So your before you have this SGM, you should ensure that all members have received your notice of the SGM. चाहे वो व्हाट्सएप पे भेजो, ईमेल पे भेजो, स्पीड पोस्ट से भेजो, और उसका आपके पास रिकॉर्ड होना जरूरी है कि आई हैव इन्फॉर्म्ड एवरीवन, दिस इज माय प्रूफ, ताकि कोई ऐसा बोल नहीं सके मुझे तो इन्फॉर्म भी नहीं किया। ओके, क्योंकि जिसको वो रास्ते चलना है वो उसके जवाब भी ऐसे ढूंढेगा, आई वॉज नॉट इन्फॉर्म, व्हाट्सएप इज नॉट द लीगल चैनल, तो ऐसा कोई लगता है उसको स्पीड पोस्ट से भेज दो। Record your record wherever you go. We have given him the notice. We have the resolution passed. The draft minutes also we have served. Then you can legally recover that money. So why act now? Extremeness is okay. So what is the risk of not applying legal risk? Building remains unauthorized. BMC can issue demolition notice anytime. Okay. Unauthorized is unauthorized, illegal is illegal. So they have full powers to issue notice. बट एक सेफ विंडो हमें दिया है कि अप्लाई करो और इससे बाहर निकलो, तो किधर ना किधर उनको मालूम है। नहीं तो अगर आपको लगता है तो रीडेवलपमेंट में चले जाओ, तो देन ऑल्सो मैं रीडेवलपमेंट में बोला आप डेमोलिशन क्यों करेंगे, मैं खुद डेमोलिश कर रहा हूँ मेरा बिल्डिंग। देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ दैट इफ आई एम गोइंग फॉर रीडेवलपमेंट, बट इफ बिल्डिंग्स विच आर 5 years 10 years जिनको रीडेवलपमेंट नहीं करना है या नहीं करना चाहिए, तो देन व्हाट? फाइनेंशियल पेनल्टी, कंटिन्यू पेइंग डबल प्रॉपर्टी टैक्स, नो रिलीफ फ्रॉम वाटर। तो ये प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर तो है डबल, इसके अलावा भी पेनल्टी लगता है। ओके, दिस यू आर पेइंग, so this is no immunity for you to not pay penalty. Penalty आपको लगना है। Value loss, property remains devalued by 30 to 40%. Loan rejection, no redevelopment. Future it was not impossible without regularization, locked forever. But you can have this standing कि मैं building C1 हो गए तो क्या करूँ उसको? You know that way. So after 26 December we don't know. You will have to pay full premium for a unauthorized value and full 100% पेनल्टी, क्योंकि ये पेनल्टी लगता है, इंटरेस्ट भी लगता है। हम सोते हैं संडे को, इंटरेस्ट नहीं सोता है। Something is wrong. No redevelopment. Future redevelopment is possible now. Pardon? Unauthorized structure गया redevelopment. हाँ. Why this impossible? Future redevelopment impossible. नहीं, I put it this way, but मेरा आर्ग्यूमेंट ये रहेगा कि मुझे अगर रीडेवलपमेंट करना है, मेरा स्ट्रक्चरल ऑडिटर बोल दिया इट इज नॉट फिट फॉर लिविंग, तो मैं क्यों रेगुलराइज भी करूं? ऐसा समथिंग इज रॉन्ग। जरा झूठ को बोला तो
या 100% वेवर है. तो 100% वेवर है ना. This is not working. Just check what is wrong. So, meanwhile, just take it. Something wrong with this? No, I don't need internet. Okay, that's fine. Cancel कर लेना. Okay. So benefits, property value goes up, easy loans, lower tax, legal status. This is the most important. कि आपका building is not authorized, it has a legal status. Water saving, redevelopment open path तो ऐसा भी है. Easy transfer, asset free property registration, peace of mind. तो normally कभी कभी register भी मांगता है OC. ओके, OC नहीं है तो उसको उसका भुगतान तो करके देता है. बट द होल आइडिया यू नीड अ रजिस्ट्रेशन फ्लैट विच इज ऑथराइज. तो वैसा देखने जाओ तो रजिस्टर इज नॉट अलाउड टू register flats of a building which has no okay. Member funding options, direct contribution, society corpus है तो society loan if the bank is giving. So direct contribution, members pay their share directly based on flat area. Simple, no interest लगता है, but society has enough funds, so they can utilize that from their repair fund or whatever it is. And if the banks are giving them any loan, then you can take that. But the best is your contribution, or if society has that much funds, with the condition that you will reimburse. तो समझो अभी मेंबर को आता है 25,000 या 50,000 भरने को, आप इस कॉर्पस में से लेके आप भले 2,000 रुपया लेके भी reimburse कर दो, ताकि फ्यूचर ऐसी कोई इमरजेंसी आवे तो you can use it. What are the frequently asked, can we apply without conveyance? So it is yes. What if our builder has disappeared? Society can apply independently, no builder required. What about violations in a building? A minor violation regularized with premium, major structural issue need case by case review. Okay. बीम तोड़ दिया उसका कोई इलाज नहीं है, कॉलम तोड़ दिया उसका कोई इलाज नहीं है, because it leads to life threatening. It is about your life. कुछ भी हो सकता है, एक कॉलम तोड़ दिया तो कुछ भी हो सकता है. So you should not tolerate that. How much will it cost per flat? But this is only case to case. Will the deadline be extended? No extension expected. Government has been formed. Don't gamble or anything. What majority is needed? 51% is sufficient for a OC application registration. So 8 success factors to strong committee. Is important to take it. कि वह करना ही है. You know. मैनेजिंग कमेटी, अरे हम तो बोले नहीं करते तो हम क्या करें, लेकिन तुम्हारा भी तो घर उसमें है, यू नो. तो खुद का घर बचाने के लिए भी यू हैव टू कन्विंस एवरीवन कि हाउ डेडिकेटेड लीडरशिप ड्राइविंग द प्रोजेक्ट. मेंबर्स यूनिटी इज रिक्वायर्ड. एवरीवन हैज टू बी कन्विंस्ड आल्सो कि भाई व्हाट इज गुड फॉर अस अल्टीमेटली. हमने सब फोर्सफुल पोजेशन ले लिया, सॉफ्ट पोजेशन के घुस गए, उसके लिए हमें भुगतान करना पड़ता है. Then expert PMC is required, and early start is better. Complete docs, all papers have adequate funding has to be done, regular follow-up, clear communication. So the biggest stumbling block to the society will be about the funds. We don't have funds, we cannot give, we don't have. So it's a do or die situation. अगर पेनल्टी से हमको बचना है तो that is the whole idea. Because if you don't do it, पेनल्टी बढ़ते जाएगा. फिर जब भी रीडेवलपमेंट का टाइम आएगा तो ये पेनल्टी भरना तो पड़ेगा.
तो हम बोलेंगे हम क्यों भरे, वो बिल्डर भरेगा। तो बिल्डर तो आएगा आपके इसमें से काट के देगा ना। बट डू यू वांट टू स्टिल टेक अ चांस दैट वे कि अंडर द ग्राफ क्या रीडेवलपमेंट होगा तभी हम लोग करेंगे, बट यू डोंट नो दैट वे। So common mistakes to avoid: waiting for right time. There is no better time than now. Hoping for extension, never hope for that. Keep his PMC low cost, low quality, delay cost more than the PMC fees. Incomplete docs, missing papers cause rejection, verify everything before submission. ओके, सो कभी कभी ऐसा होता है कि बीएमसी बोलेगा कि हमारे पेपर गुम गए, हमारे को फाइल ही नहीं मिलती है, या तो फ्लड्स आया उसमें हो गया। देन सोल्यूशन इज यू हैव टू मेजरमेंट करके फिर पूरा प्लान नया बना के उनको देना है। सोल्यूशन तो सबका है, बट इट में टेक टाइम इफ यू जस्ट डोंट फाइंड दी ओल्ड बिल्डिंग प्लान। 90% चांस वी गेट फ्रॉम द बीएमसी अंडर आरटीआई, वो आप इमीडिएटली कर सकते हैं। पुअर कम्युनिकेशन, नॉट कीपिंग इन्फॉर्म मेंबर्स, तो मेन इज द मेंबर्स ट्रस्ट। They have put trust in the managing committee and elected you all. So you have to fulfill that trust obligation, but communication has to be done. This is it, this is it. क्या है, क्या नहीं. When is a meeting? What is a meeting? Any decision are there? Discussions are there? Quotations are there? Presentations are there? Just keep sharing with them. At least they should be felt कि I was heard. हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ रहेंगे जो पूछने के लिए पूछेंगे, बराबर है। क्योंकि अगर उसको जवाब भी देंगे, आपका जवाब नहीं सुनेगा, उसके दिमाग में दूसरा क्वेश्चन तैयार हो रहेगा। तो जैसा आप जवाब देने का बंद करेंगे, उसका दूसरा सवाल चालू होगा। तो कोई बात नहीं, हमारा काम है उसको सुनना और उसको सुनाने का, समझाने का, दैट वे टू गिव द रिप्लाई। सब मिलेगा ना, जैसे केस टू केस वी विल गिव। कोटेशन तो मिलेगा ही आपको, देन ओनली यू गो टू द एसडीएम नो। बट बेसिकली फर्स्ट वंस यू डिसाइड कि हमें करना ही है, तो करना ही है, तो विल ऑन अ केस टू केस बेसिस विल गिव द कोटेशन। करेक्ट, या how we can help: feasibility study, complete assessment of eligibility of the cost estimate, documentation, survey plan, NOC management, by BMC license, premium calculation, members reports and end-to-end. So this is the role of a PMC, इसमें आर्किटेक्ट भी आ गया, लीगल पर्सन भी आ गया, स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी आ गया, लैंड सर्वेयर भी आ गया। So it is one whole, everything under one roof. हाँ, so it is MCGM and MADA, ये दोनों का OC कैंप चालू है। Even MADA also is there, so they also extended that. So your decision today: act now, save 50% premium, get 100% waiver of property value, stop double property tax, enable bank loan, legal security. This is just repetition of what I have said. What is delaying is pay full premium, pay full penalty, property remains devalued, continue, no bank loan fix. तो ये सब होना ही है, which is there. Okay. So, four-step action: schedule committee meeting, contact PMC, pass resolution, begin the OC process. So deadline is May 26. So this ends the presentation. I hope it is quite exhaustive one I have given you all. अभी कुछ सवाल जवाब है तो we can take any additional question answers you want to take. How much time? हाँ, कल करने का था। हाँ, so you immediately you call for your managing committee meeting. Okay, take a decision on that and give a reasonable time for an SGM.
where you have to pass a resolution. So we have an SGM coming up in March because we were March. discussing certain things. You know. Okay, okay. So if we have to take, we have to be also prepared. You know, what is this? What is the extent of liability that is there? What is the extent of expense that is involved? Because will ask us a lot of questions. So you want to wait till March? No, we want to start preparing. If you want to take the resolution, that day when we are presenting this, so they will ask us the question: how much will be the expense? What is the extent by which you are sure that you will get whatever you are? That there is a height violation. How will that height violation get sorted out? So will the PMC help us to get the height regularized? There is a mitigation which airport authority has already done. So will that mitigation get counted? So height restriction एयरपोर्ट अथॉरिटी बोलेगा कि मैं 8 माले का दिया हो तुम 10 माला बनाया हो तो नहीं मिलेगा. No, Let's take an example where height difference is 2.02 meters. Okay, you are in excess by about 2 meters. Right? There is a mitigation which they have put in the sense that you put red light, night marker, and day marker. That also you have complied, which means they have accepted that once there is a blockage, right? And for more than a year, this has been going. So therefore, this mitigation is really sufficient to make it happen. So all these things we don't understand the procedure, process, conveyance. The first you have got to go to AI. From AI, you have to go to the tribunal. So how will you get at what stage, etc. Will the PMC take care of this whole thing? Yes, PMC will take care of all this because situation is that you have to do it, correct? If you agree with that. तो फर्स्ट टेक अ सिंपल SGM कि भाई ये करना है या नहीं करना है. ओके एंड So we have taken that and we have filed an arbitration. We have initiated arbitration proceedings. with whom? In the High Court, we have got arbitrator appointed to the High Court. Against whom you have filed the case? Against the developer. Okay, कभी फाइल किया था? Abhi. Just started. Okay. The process of being filed, we have had exchange of documents with our lawyer. Mike जरा We need to, this is the process, it will be filed and accordingly the High Court under section 11, 9 and 11, they will appoint an arbitrator. It's a procedure which we have started following because our building is not having any OC since 2013 when we are occupied. It is nearly 12 years now. Okay. So whenever we approach the PMC, they say first you go to airport authority, get your height clearance. Who says that? PMC. Okay. The Gardner office, we had an approach, say first your building height problem, get the clearance from the airport authority. Then we look into your house. Other issues can be sorted out. This is was orally told to us, not in writing. And builder has been promising, don't worry, हम चिंता है, हम भागा नहीं है, हम करके देंगे, all those kind of things, making us. We are living in a building which is an illegal building, so to say, which has no house. So since you have gone to High Court, you should have first gone to the Consumer Forum. Yeah, opinion deferred consumer court is not the right form. It should be High Court because there was another society close by. They have initiated this arbitration proceedings. So we were guided by them. We say that is easier because the time set by the High Court is 18 months, which is extended by another 6 months. So in 2 years, you will get some sort of an arbitration award, some relief you can get it. Now, if the builder has violated the development agreement grossly, he has not got the OC as per the development agreement.
So you can get some relief. So that will be quicker than going to civil court or consumer court. So we were guided by them. They had gone already. So we also thought of taking a decision with approval of our committee, and we have just filed. It is just in the initial process. Meanwhile, we got your invitation, so we thought we'll seek your advice too. And we feel that we should go through PMC as well as simultaneously let the arbitration proceedings proceed. Whichever. So, see, there are two parts of it. One is what does High Court give judgments in such a case where the builder has defaulted? Okay. The builder is a party to the No, no. So, builder has defaulted by not giving you OC. Correct? That is your case with the High Court. So, recent High Court gave a judgment wherein HDFC Bank they took the premises on rent of a building which did not have OC. So High Court gave a judgment to the developer. Please get OC immediately, and till such time you will have to pay rupees 50,000 per day as fine in the court. Deposit every day 50,000 till you get OC. That is one judgment of the court. Okay. See, one is the GR. Okay, where GR says if builder is not doing it, we will file a notice, then you are authorized to file. Now, in this whole issue, penalty is not going to stop. In this case of HDFC, developer will have to pay. That is what the court has told him. Other view judgment court gave, taking possession of a flat without OC is itself illegal. So you are also on the wrong side, and the developer is also on the wrong side. You got my point? Yeah. Did you get my point? So there is court is unpredictable. Distinction. Okay. So there's a distinction. This is under the Arbitration Act. Okay. Now under the Arbitration Act, we have got to have a Section 9 relief. So we are getting an order from High Court to the arbitrator to give a Section 9 relief, where we are having a series of trials, which under the development agreement, the developer has to pay transit rent to all the members till such time he has given possession with OC. He has manipulated the people to take possession in order to evade the risk. So this is one of the plea that we have made to the arbitrator, that the members, original members who are there, they should get transit. Next, there is a provision in the development agreement, liquidated damages. For every month of delay in getting OC, he has to pay 3 lakhs as liquidated damages. He has to pay that. That's a huge receipt. So that is one relief that we will get through the arbitration. Now, why we did not take up the route of consumer court is because first is consumer court is long drawn. Okay, we have to go to Delhi. We go more than 1 crore, right? So all that expense goes to even the consumer court will only give damages. They will not give us a relief that he has to do this, he has to do this. All those things will not come. So this builder will become bankrupt, and then executing that becomes a big problem for us. Whereas if we have gone to the arbitrator, we will get directions on whatever, because Section 9 is equal to a civil court order. So you can go for. No, I agree. I am giving you the judgment also of your case. Okay. He will give judgment. Please go and get a OC to the developer. Pay fine per day. That is the judgment. But are you prepared? So what we are. One minute. What I'm saying. So this case you have won. 1 minute. Let me listen to. Are you prepared if the judge comes up? Why did you take possession? You are themselves. You are in the wrong boat. It is illegal to take possession of OC. I'm just highlighting you कि हम कौन से दरवाजे पे गए हैं और हमें क्या फेस करना पड़ेगा.
he stopped the rent, no? What Because I'm, what has what I'm happened is trying to that say is, why did you move in? Right? The developer has coerced, it's not coerced, it is manipulated the members to take possession in order to avoid the payment of others. He has to pay rent and such like. so ideally, court would support you had you gone to that, he is not giving us possession because it's not got OC. Try to understand legal and We are not going to high court, we are going to an arbitrator. अरे आर्बिट्रेटर तो हाई कोर्ट के थ्रू ही होगा ना कोई किसी को भी आर्बिट्रेटर बना दोगे आप It is to arbitrate on the development agreement. There is a contract entered into by the developer with the society. Right? Now he is not fulfilling the terms of this thing. It is not actually getting. We are not getting into the like the regulation of PMC and all those things. We are not coming. So what we thought is that we will take this route, whatever you are suggesting, plus the arbitration. So what is your view on that? So if you want to pursue high court, you pursue. Okay, I'm not saying no. I'm just telling you, start thinking out of the box. Okay. So judge for a judge, you are there and he is there. लेकिन दोनों मेरे कटघरे में खड़े हैं एक ने ये गुनाह किया तुमने वो गुनाह किया okay so let that go on okay but the GR doesn't mention that developer is bound to file OC. He is bound but if he is not doing it I am allowing the society to apply. Look at GR what is that says it is a developer it is a criminal intact सब हो गया सब judgment हो जाएगा but the GR says he is not doing it, so I am allowing you take this opportunity. You should. Because see, you may never know what will come up in the court. What point will come up, you never know. Like I'll tell you, recently one order came of Maharashtra Cooperative Society Act about an associate member. So you know what is an associate member? Okay. So ideally what was read, a primary member gives a two-pager line of 13 related care is making the associate member who is authorized to attend on meetings, take out records. So what was it thought from till now that if the primary member expires, then automatically the associate membership expires. What did the High Court judgment give? Even if the primary member has expired, the associate member will still remain associate. Because he has been conferred the title. There is a provision for moving. So I can interpret whichever side I want to see. So I never expected that. If this is just a situation is there, if my primary expires, my membership also goes. So always say I don't know what judgment will come. Unexpected only comes. Normally what I expect. So in your way you will get it, but then simultaneously when this GR will come, if you win that case, you can claim this also over there. Yes, this is Got my point? जो भी खर्चा आप कर रहे हो वो हाई कोर्ट में नहीं तो कंज्यूमर फोरम में तो आप अप्लाई भी कर सकते हो कि वी आर पेड फॉर दिस एंड ही हैज टू पे अस विद इंटरेस्ट देखो अल्टीमेटली so as a PMC it is a whole teamwork planning and also as a PMC fees we charge 5 lakhs which has architect legal compliance follow up मेन तो पीछे लगना है उनको that is one part. Your NOCs, each NOC will cost you around 1.5 lakh plus whatever incidental charges, if you understand, that can be 5, 10, whatever. So this is the whole gambit. But what I'm saying is that once what was due to BMC, I have paid in terms of premiums and all that. I have done my work and I have paid and I have applied. So my sole goal should be to waive off the penalty.
हाई कोर्ट में कुछ भी जजमेंट आएगा, मेरे पे भी कुछ भी जजमेंट आएगा आएगा, यू विल रिकवर from them. But right now, my only sole aim is to take 100% waiver of the penalty, which is very huge, unreasonable, very unreasonable. That way. So survey has to be done, measurement has to be done, plan has to be. नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. So ultimately, when we apply with the BMC will serve a notice on your behalf to the developer, and if he doesn't respond within 15 days, so which says that if you are not doing it, then the society is authorized to apply. So court cases there because developer is not doing. Let us understand. I have taken this record, but I am still willing to apply and pay to regularize my building. So कोर्ट में हम गए, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, नहीं बिल्डर को माफ है, तुमको ही करना पड़ेगा, तो हम तो कर ही रहे. या तो कोर्ट बोलेगा ना डेवलपर हैज टू डू इट, तो यू क्लेम योर मनी विद. तो वर्स्ट हाई कोर्ट में मैं अप्लाई करता हूँ कि बिल्डर नहीं करता है, नहीं वो बिल्डर तो करके गया, तुमने पोजीशन ले लिया ना, तो अभी तुम्हारा जवाबदारी है. So then we will be out of May 26 to apply for 100% waiver. But here, if you apply, you are in tune with the court's judgment. Either it goes against you, so you have already applied and saved the penalty. And if it is in favor of you, that time you can put it up. We have already done that, and this is our claim with interest. Please add this. जैसे कि HDFC बैंक में told to vacate or you give OC until you don't give every day you deposit 50,000. So courts are in your favor, but the other side also भी ऐसा नहीं है, उसने भी खून किया, इसने भी खून किया, तो दोनों को इसको सजा नहीं दो ऐसा. But we don't know. But what we have to see is what is best for us, because we start thinking only because we want to pay. We have to pay money, shelf money. इसके लिए हम ये सोच रहे. अगर फ्री में होता ओसी तो आधी रात को भी डाल देते हम. ओके, अब पैसा डालना है तो इसके लिए हम ये सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए. वो उसका फॉल्ट है, मेरा फॉल्ट नहीं है. तो ये अभी जो पॉलिसी के हिसाब से दिस शुड बी देयर कि भाई यू अप्लाई एंड डू इट. अभी फायर एनओसी नहीं है तो फायर एनओसी के लिए भी हैव टू पे. बीएमसी ने बोलेगा वो भी फ्री में, ये भी तुमको सब माफ, खाली अप्लाई करो और लीगल करो. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. नहीं बैठेगा ना. बट सी द होल आइडिया इज, मैंने आपको जैसे बोला, फायर एनओसी रिक्वायर्स 6.5 मीटर इधर, 6.5 मीटर, किधर 9 मीटर का रोड है, किधर 12 मीटर. तो दे हैव आल्सो टोन डाउन ऑफिशियली कि एटलीस्ट वन साइड खुला होना मांगता है कि मेरा सीढ़ी बम्बा अंदर तक जा सकता. एक बाजू से नहीं जाएगा चलेगा, एक बाजू से तो जाना है. हाँ, उससे कोई प्रॉब्लम. No, it is, see, the whole idea is we also want you get some relief and all that. Per member, I'm not going. Flat charges are there. So it is not कि भाई 100 मेंबर रहेगा तो 5 लाख है, 200 रहेगा तो 10 लाख, ऐसा कुछ. Yeah. Yeah, we'll just finish the question answer. देखो उनका question was very critical to understand. For you all also to understand कि हाई कोर्ट में गया तो क्या. But will BMC consider that? बिल्डर में इलीगल कंस्ट्रक्शन पिरियड आहे, खूप वर्षावर असतं, तर त्याचा जो काही प्रीमियम पैसे भरावा लागेल जेव्हा तुम्ही म्हणजे काही इलीगल कंस्ट्रक्शन आहे
करेक्ट. तो जैसे आपका सवाल है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन किया, 6 माले का 7 माला बनाया, बराबर है. Okay, I'll repeat. This question is if the builder was authorized to make 6 floor, he has made 7 floor. So will the whole society pay or the 7th floor pay? What according to you should be the answer? I think the builder should pay. बिल्डर तो गया, सोसाइटी को भरना है. 7 माला अनऑथोराइज है, 6 माला ऑथोराइज है विथ ओसी, करेक्ट. इफ द 6th फ्लोर द फुल बिल्डिंग इज विदाउट ओसी, तो 7th फ्लोर जो एक्सटर्नल एरिया है उसका प्रीमियम द 7th फ्लोर हैज टू पे. सोसायटी शुड नॉट सोसायटी भेदभाव करू शकत नाही मेंबर्स मध्ये. सिव्हिल कोर्ट फक्त डिसाइड करू शकते की हे कंस्ट्रक्शन लीगल आहे इलीगल आहे, फक्त सिव्हिल कोर्ट डिसाइड करू शकते. कमिटी म्हणजे आपले सोसायटी डिसाइड करू शकत नाही. सो यू वांट टू पे फॉर 7th फ्लोर? नहीं, नॉट एट ऑल. मैं बोल दूंगा मैं 1 से 6 माले पे देता हूँ, मेरा रेगुलराइज है. 7 माला नहीं है, उसको तोड़ दो. क्योंकि इसमें लेने वाले ने क्यों लिया चेक किए बिगर? क्योंकि उसको उधर 30,000 का भाव होगा ना, बिल्डर ने उसको 20,000 में दिया होगा, इसलिए वो चुपचाप ले लिया. देखो, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इफ द सेक्स यू वांट टू सफर फॉर 7th फ्लोर, नो. पण जेव्हा समजा इथे रिसेलर येतो, रिसेलरला पूर्ण माहिती नसते, त्यांनी रिसेल मध्ये घेतला आहे, त्याला पूर्ण माहिती नसते आणि म्हटलं एजंट कोणी त्याला फसवून फसला जातो. मी पण फसलोय. मी काय करावं? कारण पूर्ण हिस्ट्री जर मी काढली तर ते कमिटी मी बरखास्त करू शकते, थोडी आहे माझ्याकडे. पण मग बिल्डरचा एक्सपायर झाला तो नाही करणार, ह्युमन कोर्टात एज्युकेशन ऑफिसर काढला ते जिंकले तर मग सिव्हिल कोर्ट जर सांगते की अधिकृत अनधिकृत बांधकाम बनवायचा अधिकार तर सिव्हिल कोर्टाला आहे, कमिटीला नहीं है, पूरे सोसाइटी का नहीं है. तो मैं किधर बोलता हूँ कमेटी को डिसीजन लेगी. आपके इसमें बीएमसी को आप अप्लाई करोगे. अभी तारदेव में भी ऊपर के 3 माले डेमोलिश हुआ ना, पूरा बिल्डिंग थोड़ी डेमोलिश हुआ. नहीं, इक्वल नहीं होगा. 7 माले वाला 7 माला ही भरेगा, नहीं तो तोड़ दो. हाईकोर्ट बेक ऑफ जजमेंट देना, आई विल शेयर इट. आप देखो, इसमें 2 चीज है. अगर आपकी सोसाइटी मेंबर सब दयावान है तो ये कैसे हम सब भरेंगे, और कायदे से मुझे नहीं भरना है. जैसे कि रेफ्यूज फ्लोर है, मुझे तो मेरी जान की सिक्योरिटी, आई वांट रेफ्यूज फ्लोर, आई विल नॉट टॉलरेट. सिमिलरली इसे 7 माला हमने खरीदा ना, जैसे कि तुमने सॉफ्ट पोजीशन लेके घुस गया, इसके लिए तुम अंदर हुआ, बराबर है. पर ओसीडी का तुम भी गया अंदर, पर आपका 6 माला का ओसी है, 7 माले का नहीं है, तो 7 माला को भी भरना चाहिए ना, तो ही आपका काम होएगा. You cannot cite के everyone will pay for the sins of the developer and who has benefited and the 7th floor has benefited. पूरा बिल्डिंग का ओसी लेगा, लेकिन एक्स्ट्रा एरिया अगर होता है that the 7th floor only has to pay. आप वही बोल रहे हैं ना, आपका पूरा बिल्डिंग का ओसी नहीं है, बराबर. आपको 7 माले का ओसी लेना है, आप बोलने का 6 माले का ओसी दो. 7वें माले का जो प्रीमियम है वो भरने को तैयार नहीं है, हमको 6 माले का ओसी. The society has to take decisions in the overall interest and within the legal rules. Correct. Okay, there is a provision for an architect to be kept in the bylaws of the society. Correct. Right. So, what did the architect advise the managing committee and the society with respect to construction of the building in line with this? Many of the societies do not keep an architect. Therefore, they have not taken. The person on the 7th floor may not be the person who has been there, etc. देखो, इनका केस क्या है,
7 माले का बिल्डिंग बन गया, हर एक ने अपने अपने हिसाब से फ्लैट लेके अंदर घुस गए, आर्किटेक्ट को अपॉइंट करने का किधर बात आता है? अगर बिल्डिंग अगर बन रहा है, बिल्डिंग बन गया है, 7 माला बन गया। अरे when building is made, सोसाइटी किधर बनता है? redevelopment society already है ना, redevelopment society is already there. See, you have to go to the high बन गया, एक से 5 फ्लोर तक उसने ये लिया, सीसी लिया और आईओ लिया, बिल्डिंग बनाया, बनाते समय बनाया 7 फ्लोर, 5, 6, 7 लीगल बनाया, 1999 तो कुछ लिया नहीं, तब उसमें बढ़िया बोल रहा प्रॉब्लम है, अब उसका कुछ लिया नहीं, इन लोगों को ये सबको बिल्डर ने क्या किया, इसको देने का उसको दे दिया, उन लोगों ने ले लिया और वो ये लिया, उन लोगों ने इनको बेच दिया और इन्होंने ले लिया, डी परचेसर है, यानी उनके सब समझ के कर लिया है कम पैसे में, 105 वाले तो भरेंगे पैसा उसका. So let us take it that way. Housing society comes under MCX Act. Okay. Decision of the general body meeting is supreme. अगर आपकी जनरल बॉडी मीटिंग एक्सेप्ट करती है मेजोरिटी में, हम बलिदान दे के सबका पैसा साथ में भरो, फाइन. या तो डिसीजन लेंगे कि हम हमारा ही भरेंगे, हम मैं क्या बोलता हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि what can happen if they accept, fine. If not, 51% जो डिसीजन लेंगे वो कोर्ट भी मानेगा ना कि भाई तेरे जजमेंट एक नहीं है, 4 है. जनरल बॉडी इज सुप्रीम, वी आर सुप्रीम, वी हैव टेकन दिस डिसीजन. You go to the High Court and you say that there has been a bias, there has been a collective premeditated action which has been done, and the builder, right, has done all these things. There is not one individual mistake. Try करने में क्या नुकसान होता है? नहीं, I think है ना, we are deviating from our topic. Okay, let me tell you, sir, in Chembur area, BMC has given a order to the builder that you can construct up to 61 meters. Okay, and they have also given an AMSL, right? In writing, the BMC has given. Afterwards, BMC goes back and tells that you please get Airport Authority of India. Correct. Okay. Now, how will happen? They have authorized the builder to construct. People have purchased the flats based upon that. Construction is over. Right? And if you take that 61 meters, there is no height violation at all. But if you take what they have normally given, right, 57.13 meters, no cars and all those things, right? The height difference is would be 2.02 meters, right? So the BMC, the Airport Authority of India themselves establish a case for mitigation. Again, coming back to this thing that you put red light and all those things. 8 years you are using it, there is no problem at all. They themselves, by their own act, have said that mitigation is justified. And therefore, is there any provision for a conditional NOC that I will not construct above this, I will not put up any other thing, I will ensure that the red light is always on in the night, I will ensure the day markers are not put in place. And based upon the conditional NOC, can BMC give a conditional OC? We are on the topic of OC, occupation certificate. So we are deviating from our. No, one minute, let me understand. We are, I think, deviating from our focus is to file to get OC, occupation certificate, with a deviation of extra area provision is there. Okay? And उसका प्रीमियम है 50% है, पेनल्टी इज वेव्ड इफ आई फुलफिल ऑल दी NOCs. Okay?
क्योंकि आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन अ लेमैन्स लैंग्वेज कि जो कॉमन मैन समझ सकता है। बाकी वकालत पे जाके तो मैं वकालत भाषा में बोलूंगा तो वो हिसाब से बात कर सकते हैं, बट आइडिया इज प्रैक्टिकल हमें समझना है। जैसे इनका प्रॉब्लम था कि हमको सब लोग को भरना है, साथ मिलेगा भी पैसा, तो मैंने सिंपल बोला कि आप एसडीएम में अप्रूव करो, जो आपको मांगता है करो, बस दैट। So it is like a case to case. I cannot give any judgment on that. I can just tell you what does the court think. In this amnesty scheme, there's a provision for NOC for buildings which have not height approval. It is very vague. कुछ समझना ही नहीं मुझे rule 6. Right? It says that the state government will support that thing. Application has to be made to the government, to whom the application has to be made. So, so will you support that? One minute. Let me tell you one thing. Airport authority NOC is final. No government or court can overrule that. कोर्ट ऑल्सो कोड नॉट से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 60 मीटर्स बोला है तो मैं 61 अलाउ करता हूँ। कोर्ट विल नेवर अलाउ, गवर्नमेंट विल ऑल्सो नॉट अलाउ। अगर वो 60 मीटर है और 60 मीटर के ऊपर जितने फ्लोर है ना उसको डेमोलिश ही होना है, टेक इट स्ट्रेट अवे इफ यू फील, क्योंकि इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। एयरपोर्ट अथॉरिटी आता है बिकॉज देयर आर प्लेन्स गोइंग ओवर इट एंड देयर आर सिग्नल टावर्स ओवर इट. So I cannot make any concession and take, especially after the Ahmedabad crash. See, there are अभी recently assembly में बोला there are signals, airport का signal DN नगर में था, सैंटा क्रूज 8-9 वाले से ज्यादा देता ही नहीं था, तो बिल्डिंग बनता ही नहीं था. दैसर ऑल्सो पूरा एयरपोर्ट अथॉरिटी का लैंड है एकर्स रिजर्व फॉर सिग्नल टावर जो कभी लगे नहीं, बट उनको हाइट रिस्ट्रिक्शन है. अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, सिग्नल टावर ही है ना, उधर से तो देसर से तो कोई हवाई जहाज जाती नहीं ऊपर, उठा के फेंक दिया हो रहा है. डीएन नगर वाला भी उठा के फेंक दिया, सिग्नल सब हो रहा है. सो दिस एरिया इज रिलीज, ओके, बट दे नेवर वेट. नहीं, भले इधर 10 मल्ला हो रहे, गवर्नमेंट विल नेवर से मैं 11 मल्ला अलाउ करूंगा, नो द कोर्ट विल नेवर टेक एनी एक्शन. कोर्ट जाएंगे तो सीधा बोलेगा एक डेमोलिश करो, खत्म. So let us not go by, we will stick to airport authority. अगर आपका कोई केस में ऐसा कोई इश्यू होता है तो आप ये मान के ले लो, beyond that it will be demolished for sure, because approvals will never come. So let us, and the whole exercise is that you want to save your penalty. If I don't get OC, you will get OC till the restricted height. Okay, am I clear? Don't expect height का. तुमने किधर कॉलम तोड़ दिया उसको टॉलरेट नहीं करेगा. लिटिगेशन में between members only. They will also track the government. There also there's a big corruption which is going on. See, I am not talking about corruption. एक मिनट, बस ऐसा है ना, let's say we come to you, let's assume and we tell you find the way to help us get out of. So I am telling you, अभी बोलता हूँ आपको, मैं मेरे को आता नहीं, देखूंगा, करूंगा, ट्राई करूंगा, किंतु परंतु वाला बात नहीं है. एयरपोर्ट अथॉरिटी हाइट इज फाइनल, so you have to stick to that irrespective of whatever it is. क्योंकि I cannot promise you what I cannot do or what I think cannot happen. जो हो सकता है मैं आपको बोल सकता हूँ, जो नहीं हो सकता है मेरा रोकड़ा हिसाब बोल दूंगा कि नहीं हो सकता है या हो सकता है. दैट इज हाउ इट वर्क्स. मैं कुछ भी बोलूँ, मैं मैनेज कर लूंगा, ये लूंगा, वो सब मैनेज नहीं हुआ, इसके लिए हम आज बैठे हैं. यू नो, builder could not get the OC without following all the rules and regulations. That's why we are sitting over here. So it may be a hard decision if it is built above height. That is a difficult call, but you cannot take all members to this. नहीं, क्या बोल रहे? हाँ तो है, हाँ तो 2 मिनट, इसमें क्या है?
Yeah. बैटरी ऑफ करो, ठीक है। सर प्रीमियम जो आप बोल रहे हैं 50% रिडक्शन होगा तो प्रीमियम शूटिंग एंड यूसेज स्कीम फंजिबल में डेवलपमेंट फंजिबल में एडिशनल 0.5% एंड इसमें 50% रिडक्शन होगा विल बी एप्लीकेबल इन डेवलपमेंट चार्जेस ऑल्सो लाइक द डेवलपमेंट चार्जेस 4% ऑफ पे करते हैं See, it is this 50% waiver on the premium, as of what it says, is only on the extra FSI you have used. extra percent purchasing respect to fungible pay करके है extra percent और 0.5% figure extra तो जो भी प्रीमियम आज की तारीख में आप प्लान पास करोगे, वो एरिया का आपको जो भरने का होगा उसका 50% वेवर है। मैं अभी भी बोलता हूँ, फंजिबल का आज के तारीख में जो प्रीमियम आएगा 35% इज द एरिया यू गेट, और उसका प्रीमियम आया ₹1,00,000 तो आपको 50,000 भरना है। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट हैज टू बी देयर, क्योंकि आधा दिमाग तो ये पॉलिसी ऐसा तोड़ मोड़ के लिखते हैं कि हम समझते कुछ है, जानते कुछ है, देखते कुछ है और करते कुछ है। हाँ, ठीक है। सर मुझे प्रॉपर कोटेशन चाहिए और दूसरा ये जो आपने मुझे ब्रीफ किया है इसका भी अगर एक मिल जाएगा तो हम लोग वहाँ पे टॉप देंगे इसके लिए You are there on the group now. I will share this presentation. ठीक है, ले लें। Yeah. Yeah. Sure. WhatsApp message Yeah. क्या? I'll ask the Santosh. So we will sit with you once every. सर हमारा सोसाइटी गोरेगांव में है। हाँ। 1996 में बीएमसी ने बीएमसी स्टॉक को कुछ पैसा लेके उनके प्लॉट में रहने के लिए घर बना के दिया। इट इज अंडर लीज फॉर 60 years. Lease expires in the month of March 2026. Hardly 2 months left. No, इसके बाद हमें पेपर में ऐसा बहुत कुछ आ रहा है कि प्रीमियम भरने के बाद 5% or 10% whatever it is, you can convert the land to society's name. Okay. Now we have paid the lease till March because they are collected up to March. We have paid it. Now we want to convert this land into society's name. What issue? Owner is BMC. Original BMC, even to BMC staff. अभी पुराने सब मर गए, अभी उनके बच्चे लोग रहते ऑफिशियली, और हमने उसको रीडेवलप किया, सेल्फ रीडेवलपमेंट कर दिया। आफ्टर टेकिंग कंप्लीट परमिशन फ्रॉम बीएमसी, तो डीसीपी मिल गया, सब रेडी है हमारे पास, सिर्फ 20 हो रहा है मार्च 2026। तो हमें क्या करना चाहिए? आपका लैंड ओनर बीएमसी है? Your landowner is BMC. Yes. When did you reconstruct? Building completion certificate. You got building completion. Yes, sir. Which year you got? Which year you got BMC? 1996 में हमने रीडेवलप किया, सेल्फ रीडेवलप। तो 97 98 में फिर मिल गया, 2 साल में मतलब कंप्लीट कर दिया। So now your land is on lease, Yes, right? lease. Okay. So very soon, policy is going to come. Yes, sir. Where you will be allowed to buy that land at some ready reckoner of 25% or something. Sure, 5%. 25%. Yeah.
of the ready regular rate. करेक्ट. जैसे कलेक्टर में 10% है, में तो 5% बता रहा हूँ, जिसको रीडेवलपमेंट जाना है, जिनको नहीं जाना है वो 10% बता रहा है. तो हमने सेल्फ रीडेवलपमेंट कर चुका है. आप तो कर चुका है ना, वो हो गया. अभी आगे क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है. अभी आपको खाली लैंड का ओनरशिप लेना है. So there is a policy in the pipeline where you can buy the BMC land at a ready reckoner of 25%. Just now collector is allowed, MANA is not allowed, BMC is not allowed. So BMC में कुछ पोर्शन होता है नॉर्मली नॉन बिल्डेबल. जैसे कि आपके प्लॉट के बाद 50 मीटर का गार्डन है, तो गार्डन है BMC का है, so that becomes non buildable. So that is policy is there that the society can purchase that land from BMC at 25% ready reckoner rate because it is a non-buildable land for them. अभी आपका पूरा सोसाइटी है, तो there is a policy in the pipeline where you can buy at 25% ready reckoner. So as soon as it comes, we will inform. Okay. So we have to apply for an application. जब ये आएगा पॉलिसी तभी automatically I'll come to you. Lease आपका खत्म हो गया ना? So there are two options to you. Okay. Renew the lease till such time you get a policy to buy. Okay. Thank you. So this policy, if any action will come to force the approximately when Which policy? this BMC. Right now there is a provision for non-buildable plots. आप समझे what do I mean non-buildable? आपकी सोसाइटी के प्लॉट के बारे में 50 मीटर का गार्डन है, उसमें बिल्डिंग नहीं बन सकता है, तो यू कैन परचेस इट एंड कीप इट फॉर योरसेल्फ एट अ रेडी रेकनर 20. दैट इज देयर. अभी पूरा सोसाइटी का जैसे सेल्फ डेवलपमेंट पॉलिसी इज कमिंग रीडेवलपमेंट का, जिसमें द प्रोविजन इज देयर इवन दी SRA वाले भी सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे तो दे कैन बाय आउट द लैंड ऑफ द गवर्नमेंट विच इंक्लूड्स BMC. दैट शुड कम एनी मोमेंट, ऐसा मैं समझता हूँ. बिल्डिंग है 70 मीटर का और हमारा ऊपर वो है थोड़ा तो 1 फ्लोर एक्स्ट्रा हो गया तो फायर वाला को देता नहीं देता है. हाँ वो बोलता है एक्स्ट्रा फायर रेस्ट में चला गया ना ऑफिस. हाँ बोलते हैं कि सेकंड स्टेट चाहिए एक्स्ट्रा फायर लिफ्ट चाहिए, तो वो केस में इसकी हम जा सकते हैं. बिल्डिंग को 2013 में कंप्लीट हुआ. So building requirement of above 70 is 2 staircase. बराबर है. That means that first one floor is illegal, illegally constructed. Building plan में भी नहीं होगा वो, बराबर है ना? तो as I told you, there can be a possibility by putting a separate staircase outside, adjoining to the dead wall. ऐसा कर सकते हैं. That could be a solution. As per site वो possible नहीं होता है. As per site वो नहीं कि वो कहाँ से कर सकते नहीं होता है. हाँ ओपन स्पेस में जो ओपन से बिल्डिंग के साइड से above 70 meters, it is the BMC's policy for 2 staircase. तो because of exit entry, तो फायर ब्रिगेड भी बोलेगा 2 staircase नहीं तो मैं नहीं दूंगा आपको. तो you apply, find some place around the building के चिटका के. हाँ दूसरा प्लॉट एक है, दूसरा प्लॉट 9 मीटर भी नहीं मिलता है. अगर उनको 9 मीटर भी कौन से साइड से देते हैं 9 मीटर ने that can come to 6.5. हाँ तो वो भी नहीं जगह पे नहीं मिलता है. कोई इशू है कि वो उसी नहीं ले पा रहे, नहीं मिल रहा है. तो कितने माला का बिल्डिंग है? 23 तक का ओसी है. हाँ है खाली एक सीसी है नॉट ओसी, इसलिए वो पेंडिंग है. तो ये स्कीम में So क्या हो क्या कर. तो एक्चुअली साइड देख के या तो प्लान देख के where a second staircase can be built. तो मैं आपको तो that we'll have to check. And नहीं तो फिर आप 23 का तो ले लो. तो मेरा नंबर किसको तो जो हाँ you can give it to me. मैंने अभी लाइव अभी सवाल जवाब चालू है.
मुकुंद अच्छा अच्छा ओके ओके ठीक है